हेलो फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी सीरीज़ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की टेक्स्ट बुक। तो इस बुक का जो नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर्स है, वो पहले हम देख लेंगे और क्या क्या चैप्टर्स है। तो ये बेसिकली जो है बुक का पहला जो रहता है वो सारे पेजेस उसका पीडीएफ है। तो हम देखेंगे कि क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है वह रिसोर्सेस चैप्टर में बुक में हमारा चैप्टर से टोटल 5 चैप्टर से पहला हो गया रिसोर्स, दूसरा चैप्टर हो गया लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में है। देन आपका एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज एंड देन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बेसिकली दीज 5 चैप्टर्स आर देयर इन द क्लास 8th एनसीईआरटी ऑफ सोशल साइंस एंड बेसिकली जियोग्राफी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चैप्टर को देखेंगे और इस एक ही वीडियो में हम पूरा 5 चैप्टर्स को रीड आउट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रही अपने चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नेम है रिसोर्सेज। मोना एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो बेसिकली एक स्टोरी से चीज़ें स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है इन सारे चीज़ों में जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसी के बारे में शायद स्टोरी होंगे, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। यू आर यूजिंग देम सो डेफिनेटली दे हैव यूटिलिटी। Utility or usability is what makes an object or substance a resource. How does something become a resource? Raju now wanted to know. So its use or utility gives it a value. All resources have some value, right? So Amma told the children that things become resources only when they have a value. अच्छा, तो इस स्टोरी के बीच में भी शायद कुछ हो सकते थे। बाय द वे आई डोंट थिंक क्या ऐसा होंगे। चलो, तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट लाइन, दैट स्टेटमेंट, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज ए वैल्यू। इट्स यूज or utility gives its a value. All resources have some value, said Amma. Value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. Okay. Then some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they were patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. So what is a patent? Patent means the exclusive right over any idea or invention. Then technology, it is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. तो ये देखो काफ़ी आसान सी जो टर्मिनोलॉजीज है, बट अगर आपको डिफाइन करने बोला जाए ना तो आप नहीं बता सकते। तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. So basically, to create resource, okay, technology is needed. Then types of research, and what is technology? It's nothing but the knowledge and skill that to making or doing things. Next comes the types of resources. So resources are generally classified into natural, human-made and human resource. Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way.
Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources क्या है? Those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activity, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are non-renewable resources. So non-renewable means limited resources, right? They are limited. Their stock is limited. What is stock of resource? It is the amount of resources available for use. That is the stock of resource. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. Then human-made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Right? So sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. So this is but ऐसे कैसे हो सकता है यार कि natural substances become resources only, not only. अच्छा समटाइम्स पहले मेंशन किया हुआ है कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource, right? So technology is also a human-made resource. So people like us use natural resources to make human-made resources. Now, human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are special resource, right? Human beings are special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. Now यहाँ पर दिया हुआ है, do you know human resource refers to the number, quantity and abilities, mental and physical, of the people. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. Definitely, if a man does not have any skill, he or she won't be considered as that much valuable resource, right? So more skill means you are more valuable, you are more resourceful. Next is conserving resources. So Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up, and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People are suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. So what is sustainable development? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation. That is sustainable development. Now, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. So what is resource conservation? Careful use of the resources
that is called resource conservation. Resource conservation is not about storing the resources, it is the careful use of the resources, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development, right? As well as the conservation is also important, stock etc is also involved in resource conservation. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of, तो ये सब ठीक है चलो ओके। तो ये था आपका कंजर्वेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितना कितना मिला, फिजिकल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर दिया है और भी डिटेल में आपको जरूर इसको जानना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो देखो ये बट यहाँ पर जानने से क्या होगा कि अगर इस पॉइंट आप याद रखोगे तो डेफिनेटली सीटेड वगैरह में आपका बहुत मदद हो जाएगा, क्योंकि वही पे यही सारे पूछे जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनेबल communities to care for their own environment. Okay, so the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore it is our duty to ensure that all usage of renewable resources are sustainable, the diversity of life on earth is conserved, the damage or to natural environmental system is minimized. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, ज़्यादा कुछ थे नहीं। अगर रिसोर्स का आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, मतलब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के टाइप्स के बारे में बात किया गया और रिसोर्स कंजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया गया। तो हम चलिए तुरंत शिफ्ट करते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में हम आ गए हैं। यहाँ पर चैप्टर का नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो स्पेसिफिक रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। हमने पहले चैप्टर में देख लिया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है देखेंगे। लेट्स डू ओके। तो हम Peter said two different parts of world and lead very different lives. So this difference is because of difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. अच्छा, तो बोल रहा है कि क्यों डिफर करता है एक प्लेस दूसरे प्लेस से, तो उनके प्राइमरी जो रीजंस होती है वो सर यही होती है कि वहाँ अगर लैंड डिफरेंट है, मतलब सॉयल इज डिफरेंट, वाटर इज डिफरेंट, नॉट वाटर इज डिफरेंट बट वाटर अवेलेबिलिटी डिफर्स, ओके, देन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिफर्स, टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिफर, दैट्स व्हाई ईच प्लेस इज यूनिक. So do you know 90% of the world population occupies only 30% of the land area. 90% of the world population occupies only 30% of the land area. तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि ट्रू फॉल्स में आपका आ सकता है कि 90% of the world population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. ठीक है, तो only 30% एरियाज में पीपल, वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन सिर्फ 30% एरियाज में ही बिलोंग करता है. Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of the small percentage are not habitable. ठीक है, तो इस 30% और ये पहले जो हमने 30% की बात की थोड़ी डिफरेंट है, तो आप समझ लो. लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली अबाउट 30%. टोटल लैंड की बात करें उनमें से 30% जो है, ठीक है, टोटल अर्थ का ओनली 30% लैंड है, बाकी तो पानी है. ठीक है, और इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. ठीक है, पर फिर से इस 30% का हम हर जगह हैबिटेबल नहीं है. हमने जैसे कि देखा कि ओनली उसका भी उस 30% को अगर मैंने 100 में काउंट किया, देन फिर उस 100 का 30% जो है वहाँ पर हमने पीपल live inhabit, people live there. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं
नहीं। लैंड यूज हम देखेंगे, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. कैन यू लिस्ट अप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different ways in which Mumbaj and Peter family the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Then land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. Then conservation of land resources. So growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created the fear of losing these natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. What is weathering? The breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and human activity. तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है. तो डेफिनेटली अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो बेसिकली इन लेवल की बुक्स ज़्यादा कुछ काम की है नहीं. बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि यार वो जो इन्फीरियरिटी है ना वो हट जाएगा कि यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्या था नहीं थे. कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा कि हाँ यही चीज़ें है और मैं यहाँ से प्रिपेयर करूँगा, इतना पढ़ूंगा तो सारे सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आपका अंदर आ जाएगा. सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली, तो लैंडस्लाइड के बारे में बात करें. अच्छा, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट. तो हमने वेदरिंग के बारे में देखा कि वहाँ पर दिया हुआ था. तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन स्लोप. दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज, क्योंकि ये सडन होती है. देन ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड, सो दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. A case study: a massive landslide hit Pangi Valley near Rekong-Puyo in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet Road National Highway 2022. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi Valley village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi Valley was completely vacated to avoid any possible loss of life. Then mitigation mechanism. So advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. So hazard mapping to locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements. Construction of a retention wall to stop land from slipping. Increasing the vegetation cover to arrest landslide. The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. तो ये कुछ मेजर्स है लैंडस्लाइड के रोकने के लिए कि हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड. तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. टेक्निक्स ओके. सो मिटिगेशन टेक्निक्स फॉर लैंडस्लाइड्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हो कि हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स. द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with rainwater and spring flows.
तो ये थी बातें। अब देखो क्या दिया गया है, डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। हाँ ये तो पता था, ठीक है। Then factors of the soil formation. The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ, okay, from place to place. तो क्या क्या फैक्टर्स होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फॉना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम एंड क्लाइमेट, ये हमने सॉइल जियोग्राफी में पढ़े थे। चलो अब देखो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल इरोशन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। फैक्टर्स which लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, दैट इज। तो ये मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आया हुआ था सीटेट में। ऑप्शन दिया होता है कि इनमें से कौन एक सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है इस पर, ठीक है। तो मल्चिंग जो है एक मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है। मल्चिंग क्या है ना, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो मल्चिंग जो है ये क्या करता है ना, एक ये सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में मल्चिंग प्रैक्टिस किया जाता है या मदद करता है, ठीक है। तो रिटेन सॉइल मॉइस्चर जो है इसे हम मल्चिंग के थ्रू करते हैं। तो मल्चिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन व्हिच हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर। देन कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स, ओके। तो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो कंटूर बैरियर्स आर डन फॉर टू कलेक्ट वाटर, ओके। Contour barriers are created for collecting water. Then आता है rock dam. The rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. तो rock dam भी बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि to slow the water flow and that prevent the soil erosion. Then आपका trace farming, ये भी एक soil conservation method है कि broad flat steps और traces are made on the steep slope so that the flat surfaces are available to grow crops, so they reduce surface runoff and soil erosion. तो trace farming एक method है soil conservation का, trace farming. देन आता है इंटरक्रॉपिंग. सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. तो इंटरक्रॉपिंग भी एक मेथड है. इंटरक्रॉपिंग क्या है ना, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. तो ये एक ही जमीन में, ठीक है, डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वो इंटरक्रॉपिंग हो गया. देन कॉन्टूर प्लाउइंग क्या है ना, प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. मतलब स्लोप जैसे है ऐसे ही हम उस स्लोप को फॉलो करते रहते हैं. तो हो गया आपका कॉन्टूर प्लाउइंग, ठीक है. देन शेल्टर बेल्ट क्या है ना, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन. सो रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. तो ये शेल्टर बेल्ट जो है ये भी एक क्या है आपका सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है. तो क्या क्या मेथड हमने पढ़ा देखो, माल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम. माल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर, रॉक डैम्स. माल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर, रॉक डैम्स. देन टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लाउइंग एंड शेल्टर बेल्ट. इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर प्लाउइंग एंड शेल्टर बेल्ट. दिज 7, ठीक है, सेवन मेथड्स आर देयर फॉर सॉइल कंजर्वेशन. एक हो गया माल्चिंग, दूसरा हो गया कॉन्टूर बैरियर्स, देन रॉक डैम, देन टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लाउइंग एंड शेल्टर बेल्ट्स. ओके, नाउ वाटर रिसोर्स की बात करेंगे. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. 3/4 of the earth surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. हमने इसका जो परसेंटेज है कि ओशन में क्या है नहीं है, वो हम किसी पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था, किसी चैप्टर में था. तो nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible only
only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. तो जो भी है लेक्स वगैरह दिन ग्राउंड वाटर ये सबको मिला के सिर्फ 1% ही है जो हम फ्रेश वाटर के तौर पे हमको मिलता है. नाउ डू यू नो इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6000 क्यूसेक या क्यूमेक, क्यूबिक नहीं क्यूसेक या क्यूमेक हो गई है, किलोमीटर पर ईयर इन द year 2000. Okay, then do you know a dripping tap wastes 12,000 liter of water in a year. a dripping tap, ठीक है, जो एक टैप से अगर एक ड्रॉप पड़ते रहे तो 1 ईयर में ये टोटल 1200 लीटर वाटर को वेस्ट करेगा. तो ये बात है. बाय द वे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए है फैक्ट, ठीक है, कि जानने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वो बात है. बट ये एग्ज़ाम में शायद ही कभी आएगा. ओके, हम देखते. सो 1% जो है वो आपका टोटल था. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. नाउ फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. फ्रेश वाटर देयरफॉर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. बिकॉज हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पता है कि ये कि जो है साइकिल की तरह मूव करते रहते हैं वाटर. तो नाइदर कैन बी सब्सट्रैक्टेड नॉर कैन बी एडेड एंड इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. देन इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वैरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. Okay, then humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. So water for agriculture industry is generating electricity through reservoirs of dams are the other usage. So increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution, right. सो देखो एवरेज जो है हम 150 एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. तो कहाँ वो वाटर यूज़ होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो. ड्रिंकिंग के लिए ए पर्सन 3 लीटर पर डे, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लाशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए 20 लीटर, गार्डनिंग के लिए 23 लीटर. ठीक है, तो भाई रोज़ कौन गार्डनिंग करता है. तो कोई अकेला पर्सन थोड़ी गार्डनिंग करेगा. तो गार्डनिंग में तो पूरा फैमिली ही का ही गार्डनिंग हो गया. तो बाय द वे तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो. अब देखो, डू यू नो है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट. ओ माय गॉड. देन अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकास. तो क्या है ना, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र. तो ये याद रखना भाई, इंटरेस्टिंग चीज़ है. अमरेली सिटी महाराष्ट्र, यहाँ पर फ्री में वाटर नहीं मिलता. ठीक है, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र में सारे जनता 1.25 लाख जो जनता है वो सारे को वाटर खरीदना पड़ता है. ठीक है, अब रियलिटी क्या है तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पर ऐसा ही बोल रहे हैं. देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. तो नाम क्या पड़ा हमने, अमरेली इन ऑफ सौराष्ट्र सिटी, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र. देन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over-exploitation and contamination of water sources. Conservation of water resources. Now, access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. So कैसे रिवर जो है या सरफेस वाटर है वो पॉल्यूट होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात किया जा रहा है. मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस
effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. Okay. Now, do you know rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftops and directing it into an appropriate location where it is stored for future use. That is called water harvesting. On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. Okay. ये कुछ फैक्ट्स है जो कि याद नहीं रहने वाला और एग्ज़ाम में तो आता नहीं यूजुअली, ठीक है, बट आप एज इन्फॉर्मेशन आपको जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो लिखने में आपका मदद कर सकता है डेफिनेटली यूपीएससी वगैरह के लिए. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो सम स्कूल चिल्ड्रेन आर visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition are collected from different parts of the country. So Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lamps, shades and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty." तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि एनिमल रिसोर्स एंड प्लांट रिसोर्स की बात करें तो वहीं पर है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले चैप्टर दिखाते हैं कहीं क्लास में. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर, तो वही रिपीट हो रहा है देखो. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. So wildlife का मतलब क्या होता है ना, ये birds, plants, animals सबको include करता है, insects as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wools. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals, big or small, are all are integral to maintaining balance in the ecosystem. Do you know vultures in the Indian subcontinent are dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller. तो ये डाइक्लोफेनाक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि भालचर की संख्या हमें कम हो रहा है, आज दिखाई नहीं जाते. और तो इसका पीछे का रीज़न क्या है ना, लाइफ स्टॉक यानी जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो पेन किलर या मेडिसिन यूज़ करती है तो वहाँ पर डाइक्लोफेनाक नाम की एक चीज़ होती है जिससे वो जो भालचर है उनको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, या किडनी फेलियर हो रहे हैं उन लोगों का. Then a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. Then distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands and scrubs and tundra. राइट. सो मेजर वेजिटेशन ग्रुप्स क्या क्या है ऑफ द वर्ल्ड का कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड स्क्रब्स है एंड तुंद्रा है, ठीक है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा, दीज आर द मेजर फॉरेस्ट, दीज आर द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, फॉरेस्ट, देन आपका आता है ग्रासलैंड, देन स्क्रब एंड तुंद्रा. Then in areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with
areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stunted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. Conservation of natural vegetation and wildlife. तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats. For the plants and animals, many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. So deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in the sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hide, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. The national park क्या होती है ना, natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and future generations. तो ये national park क्या है, wildlife sanctuary क्या है, ठीक है, देन बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. तो ये अलग से आप क्लियर कर लेना, ठीक है. अब awareness programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged. तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, वन महोत्सव ये क्या है, ठीक है. तो सीटेट के लिए कि आ जाए कि ये क्या है ना, एक फॉरेस्ट रिसोर्स के या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करने का एक तरीका है या मेथड है. वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bastards and peacocks is illegal. ठीक है. तो an international convention sites, ये साइट्स के बारे में आपको जानना चाहिए. हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. तो साइट्स क्या है, ठीक है, वो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. तो स्टेटमेंट वाली सवाल आपका आ सकता है कि ट्रू या फॉल्स क्या है. तो देखो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. तो ये देखो ये टर्म है इंटरनेशनल सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क. ठीक है, ये है एक ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. Then do you know CITES? CITES का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. तो ये होगा आपका CITES का फुल फॉर्म है कि Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, roughly 5,000 animals and 28,000
species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloe vera are some examples. Okay, so these are the some examples of plants, ठीक है, एंड एनिमल्स जो कि इस साइट्स का लिस्ट में है, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होती है। देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रहा है तो इसलिए मेरे को अपलोड करने में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि इतनी इंटरनेट मेरे पास है नहीं, फ्री वाईफाई नहीं है कुछ, तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं इस वीडियो के यहीं पे स्टॉप करूँगा और बाकी के जो चैप्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब अलग पार्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।